fighter stream of Indian Air Force. He is a Category A qualified flying instructor with over 4,200 hours of flying experience on MiG-21, Iskra, Kiran, PC-7, HPT-32, Microlight and various other aircraft. He is also qualified as a second pilot on Chetak Cheetah helicopters and a categorized operations officer on SAM-3, widely known as Pichora. He has held a number of command appointments in his career. He has commanded a frontline fighter base on the western border, a premier flying training base, the prestigious Flying Instructor School, the Institute of Aerospace Safety and Basic Flying Training School. His other appointments include Chief Instructor Flying at Air Force Academy, Operations Staff at Headquarters Central Air Command, and Directing Staff at College of Air Warfare. As an Air Vice Marshal, he was the Air Officer Commanding Advanced Headquarters Western Air Command Jaipur prior to his previous appointment as the Assistant Chief of Air Staff Personnel Officers. He is an alumnus of National Defence College, College of Defence Management and Defence Services Staff College. His educational qualifications include Master of Philosophy in Defence and Strategic Studies, Master in Management Studies and Master in Defence and Strategic Studies. He is a recipient of Vishisht Seva Medal and Commendation by Air Officer Commanding-in-Chief. The training faculty is headed by Air Vice Marshal D.S. Joshi, Deputy Commandant, Air Force Academy, since 1st February 2023. He is an alumnus of the 76th NDA and was commissioned in the fighter stream on 16 June 1990. The air officer has more than 3,400 hours of flying experience on various types of fighters, trainer and microlight aircraft, and is operationally qualified in all roles on the MiG-21 and Jaguar. He is a qualified flying instructor and an instrument rating instructor and examiner. Air Commodore Anish Agarwal, Vishisht Seva Medal, Chief Instructor Flying, heads the flying training, and Air Commodore Manmeet Singh, Chief Instructor Ground Training, heads the ground and outdoor training. Other than the training at Air Force Academy, the institutions which have imparted flying training to the trainees present here on this parade ground are Fighter Training Wing at Air Force Station Hakimpet and Navigational Training School at Air Force Station Begumpet. Air Force Station Hakimpet is commanded by Air Commodore Pankaj Jain, while Air Force Station Begumpet is commanded by Group Captain Manish Kumar. The planning and coordination of the combined graduation parade and related activities have been accomplished under the guidance of the CGP Secretary, Group Captain Dilip Bhagwat. Ladies and gentlemen, in a short while from now, the Akash Ganga skydiving team of the Indian Air Force will perform a breathtaking parachuting display right in front of you. I know that most of you would be wondering what is up next, so let me inform you. Up above in the skies, you would hear and even spot a Mi-17 helicopter flying at 8,000 feet. The members of the skydiving team who are at present inside the helicopter will be jumping out of the aircraft and landing in front of you. From now on, there will not be a single moment that you would like to miss. So sit back, hold tight and get ready to feel the adrenaline rush and keep your eyes glued to the beautiful skies above. Our hopes, like towering Himalayan eagles, aim at objects in airy height. The little pleasure of the game is from afar to view the flight. You may call it insanity, but we say, for God and country,
We defy gravity. The Akashganga team is India's premier military parachute display team, based at Paratroopers Training School, located at Agra. The team displays at venues all over India and abroad throughout the year. Our team boasts one of the finest air warriors of the Indian Air Force, embodiment of professionalism, discipline and ethos of one of the largest air forces of the world. टीम अपने जोशीले प्रदर्शन के माध्यम से देश के युवाओं को भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही टीम इन खूबसूरत पैराशूटों को कुशलता से उड़ाते हुए हवा में इंसानों की क्षमता का भी प्रदर्शन करती है। Akashganga team has carried out jumps from a variety of aircraft, depending on the nature and requirement of the display. The team has jumped from almost all platforms available in the inventory of IAF, namely AN-32, Avro, Dornier, IL-76, Mi-17, C-130J, and even C-17 Glowmaster. For today's demonstration, the team would be carrying out a jump from Mi-17 helicopter. इस टीम का सभी के द्वारा उत्साहवर्धन किया गया है और हर छलांग के बाद जनसमूह ने उन्हें प्यार दिया, क्योंकि इन्हीं वायु योद्धाओं ने गड़गड़ाहट चुराई, आसमान को रंगीन किया और सैकड़ों युवाओं को इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित किया। ये टीम भारतीय वायुसेना की एक जीवंत और साहसी छवि पेश करती है। सफेद पोशाक पहने हमारे शारीरिक रूप से फिट जंपर्स वास्तव में आकाश में सीधे स्वर्ग से नीचे आने वाली आकाश गंगा का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। While we wait for the helicopter to come overhead, allow me to give you a background check on Team Selma Mater. All the members of the team are qualified parachute jump instructors of Paratroopers Training School located at Airforce Station, Agra. The unit is responsible for training and supporting all Indian airborne forces as well as providing a unique demonstration of free fall and canopy skills throughout the year. इन पैराशूट जंप प्रशिक्षकों का काम बुनियादी पैराशूट पाठ्यक्रमों से गुजरने वाले हवाई सैनिकों को शुरुआती रूप में निर्देश देना और प्रशिक्षित पैरा जंपर्स को किसी भी शत्रुतापूर्ण इलाके में पैराशूट से उतरने के लिए उच्च स्तर की तैयारी में रखना है। Ladies and gentlemen, the 9-member team carrying out the display today will be exiting the helicopter together in a single stick. The team leader for today's demonstration is Wing Commander Rahul Jha, who has more than 1,000 jumps to his credit. आकाश गंगा टीम के उत्साह और समर्पण के साथ नवीनताओं एवं निर्भीकता ने भारत में स्काई डाइविंग को एक लोकप्रिय खेल के रूप में विकसित होने में मदद की है। टीम के सदस्य देश के हर संभावित भूभाग पर अपनी पकड़ बनाने में कामयाब रहे हैं। Ladies and gentlemen, I will request you all to put your shades on and look up above in the sky and try to locate the free-falling birdies of the team. The members of the team will shortly deploy their parachutes and paint the skies with colorful canopies. तो देवियों और सज्जनों, दिल थाम कर बैठिए और पूरे जोश और जुनून के साथ अपनी आंखें एयरफे के सौंदर्यमय आसमान पर टिकाए रखें, जहां हमारे आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम के पैरा जंपर्स एक अत्यंत ही साहसिक और रोमांच से भरपूर प्रदर्शन करने जा रहे हैं।
canopies are two jumpers flying with their canopies joined together. This complicated maneuver is called a hand plane. They are linked with the help of their hands in an exhausting and physically demanding maneuver. Look straight ahead as they de-link and land individually. A very good morning to you all. Ladies and gentlemen, I, leading aircraftsman Shubham, will guide you through the display of precision rifle drill by the Air Warrior Drill Team Subroto of Indian Air Force. Air Warrior Drill Team Subroto is a unique display team and the first of its kind in India. The team consists of 30 young and vibrant air warriors who have been handpicked for the desired task. So far, the team has performed all over the country during last 19 years. Today, the team will perform unconventional and breathtaking rifle maneuvers which will leave you enthralled and awestruck. The motto of the team is Drill to Thrill. The team is now ready to increase your heartbeats by their thrilling performance and will perform all its advanced thrilling moments in 10 different formations.
Get set as we take you through the precision rifle drill with its first formation, the V formation. From here, the team will advance forward to present the impressive rifle skills in closer view to you all. I need not mention the strict physical regime of the team members as the 5.5 kg 303 rifle with bear bayonet appears as a toy in their hands. Now, the team is switching over to alternate line formation. Meanwhile, leading aircraftsman Raghupati Dubey is performing solo advanced drill, which is a combination of agility, flexibility and strength. The team now spreads over into plus formation and moves back to demonstrate their confidence in drill of self and their teammates. Watch out for one of the most difficult moments. Throw their rifles blindly to the rear man while marching. Ladies and gentlemen, can we have a huge round of applause for these air warriors? The next formation is the inclined line formation. Here you can witness a series of drill exercises performed in continuation, followed by marching in the same order. Ladies and gentlemen, have you seen waves? Enjoy these moments as smooth as ripples of water. Ladies and gentlemen, do not take your eyes off the rifles which are going to be exchanged in that magical moment. And here they perform one more time for those who missed it
first time. The team will now advance forward after rearranging themselves into double aircraft formation and then demonstrate their skill in groups of 4. And here, leading aircraftsman Raghupati Dubey is back among us with their impressive rifle maneuvers. Ladies and gentlemen, a big round of applause for these air warriors. The team will now move back to form the square formation and will perform combination of movements in zigzag formation. The team now arranges itself for the double line formation to give you all a closer view of drill movements. Ladies and gentlemen, while you all enjoying the drill moments, let me introduce you to the team members. Today, the team is led by leading aircraftsman Sandeep Teotia. Front rank left to right we have leading aircraftsman Abhishek, Aryant, Sameem Alam, Suganthan, Abhay Rajput, Vijay Teotia, Sahil June and Amit Rathod. Rear rank left to right we have leading aircraftsman Sahil Chauhan, Bhupendra, Devendra Dagar, Amit Vikram, Rajkumar Gupta, Santanu Satpathy, Saurabh Lodhi and Suryakant Chaube. Officer in charge of AWDT, Wing Commander Kunal Khanna, Team Administrator of AWDT, Squadron Leader Akash Gangas, along with the able team of instructors, Junior Warrant Officer MDB Rahman, have been actively involved to bring up the standard of the display which you had witnessed. The team has prepared itself for the grand finale, the tunnel formation, which is the most thrilling moment of the day. Ladies and gentlemen, watch out for the team leader who is going to test the precision of drill of its teammates by passing through the tunnel of rotating rifles with bare bayonets. This moment is a result of immense practice, focused hard work,
coordination between mind and the body, and the confidence in the abilities of self and teammates. Ladies and gentlemen, please put your hands together once again for the wonderful performance by the young Air Warriors of Air Warrior Drill Team Subroto of Indian Air Force. Ladies and gentlemen, as the Air Warrior Drill team marches out, you can see the Akash Ganga team marching in from your left. The team leader, Wing Commander Rahul Jha, will now introduce the team members to the Deputy Commandant. The team members are NWO Mahesh Machkanur, Officer Vishal Verma, JWO Sandeep Chaudhary, JWO Pavan Indora, JWO Naresh Babu, JWO Satish Jakhad, Sergeant Vikram, Sergeant Sandeep Tunwal. Ladies and gentlemen, please give them a huge round of applause. Skydiving display by the Akash Ganga skydiving team and the daredevilry of the Air Warrior Drill Team. Ladies and gentlemen, in a short while from now, today's parade, consisting of flight cadets who would be commissioned today, will be forming up in front of you. While we await the commencement of the graduation parade, we would take this opportunity to briefly acquaint you with the training pattern of the trainees who are going to be awarded the President's Commission today. A total of 121 flight cadets of 212 Flying Corps of Permanent Commission and Short Service Commission for men and women commenced ab initio flying training at the Faculty of Flying in December 2022. The faculty is also home to the pre-flight training course for the direct entry cadets of the flight branch selected through CDSE or AFCAT. After successful completion of the Stage 1 training phase, some of the cadets moved to Air Force Station their Stage 2 training with the Fighter Training Wing, where they fly the Hindustan Jet Trainer 16 Kiran aircraft. The trainees have now been trifurcated into the fighter, transport and helicopter streams. After completion of the respective Stage 3 training, ladies and gentlemen, all officers will join the frontline operational squadrons of the Indian Air Force. It is also pertinent to mention that 53 cadets of 212 pilots course who had joined Air Force Academy
after completing their training at the National Defence Academy, have also received their B.Tech degree in Applied Electronics and Communication from Jawaharlal Nehru University. The next group of aviators being commissioned today are the trainees of 212 ab initio navigation course. Today, 5 trainees of the navigation branch would be commissioned. Their training was conducted at the Navigation Training School located at Airforce Station, Begumpet. Ladies and gentlemen, may we draw your kind attention to your right to witness the solemn movements of the Nishan Encasing drill, wherein the President's color of the Academy is being honored and prepared by the Nishan Toli to be paraded today. The President's color has its history engraved in the ancient Indian traditions. In ancient times, whenever any military unit marched, they carried a flag of their respective kings to demonstrate their king's supremacy. The flag was very significant, as if the army lost its flag to the hands of the enemy, it was a humiliation. And if the army captures the flag of the enemy, then it was a matter of pride, honor, and an occasion of victory. The tradition continued during the colonial rule. When the British Army moved across India, the regiments carried their version of the King or Queen's flag. When India became a republic on 26 January 1950, all these versions of the King or Queen's flags were laid to rest in the Indian Military Academy in Dehradun. These days, the award of President's Color is the highest honor that can be given to any military unit of the country. This is the ultimate acknowledgement of the unit's commendable service since its formation. Although today, the units have stopped carrying the color into battles, the tradition to receive, hold, and parade with the color during ceremonial parades is still prevalent in the armed forces. When they march by, they carry with them the living spirit of the military formation or unit. 10 September 1975 was a red letter day in the short annals of the Academy, where we are sitting today, which had the proud privilege of being the first non-combat unit of the Indian Air Force to receive colour from Shri Fakhruddin Ali Ahmed, the then President of India, at a parade commanded by Air Commodore Lakshman Madhavrao Katre, AVSM, who later became Chief of the Air Staff. The Nishan Toli comprises of 6 flight cadets who are specially selected for the occasion. Today, the Nishan Toli is being led by Flight Cadet Abhinav Gorsi. Ladies and gentlemen, the parade is about to commence, and in a short while, the sounding of the bugle will herald the beginning of the combined graduation parade.
Ladies and gentlemen, keep moving ahead as the parade is now marching in, keeping in step with the famous tune of Northern Warrior. Look at their faces, filled with pride and eyes shining with determination. As they put their best foot forward, they march today on their way to becoming worthy officers of the Indian Air Force. Look at the marching contingents of the cadets in the blue Air Force uniform. Arms swinging, heels digging in, heads held high. Proud of the Indian Air Force heritage and motto, touch the sky with glory. Whether in the sky or on the ground, these air warriors would approach their task with confidence, dedication and pride. Now, the parade adjutant, Flight Cadet Siddhant Singh Thakur, will hand over the command of the parade to the parade commander, Flight Cadet Atul Prakash. The armed forces perform parade for ceremonial purposes as a show of discipline, to display the military might and to instill confidence in the country's military forces. Parade is a powerful aid to inculcate discipline and to develop a sense of military pride amongst the personnel of armed forces. The precision of parade is not only a sign of good discipline and camaraderie, but also a crucial element in raising the standards of military service.
Ladies and gentlemen, may I draw your attention to your right as the Nishan Toli is about to march in before you. When the Nishan Toli passes in front of you, all are requested to rise and those in uniform are to salute. एवं सज्जनों, जब निशान टोली आपके सामने से गुजरती है तो आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और जो वर्दी में हैं वे सलामी दें। अब परेड हमारे समक्ष है। वायुसेना अकादमी के कमांडेंट, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ प्रशिक्षण कमान, वायुसेना अध्यक्ष और माननीय रक्षा मंत्री के आते ही परेड सभी का अभिवादन करेगी। Ladies and gentlemen, after having introduced the flying and navigation branch in the beginning, let me now introduce to you what duty each officer of the ground duty branches who are graduating today would perform in the Indian Air Force. The administration branch cadets are trifurcated into general administration, fighter controllers and air traffic controllers. Today, of the 50 trainees of the administration branch, 28 cadets would be commissioned into the Indian Air Force as air traffic controllers, 19 as fighter controllers and 2 into the general administration stream. The logistics branch cadets are trained in supply chain management, procurement processes, inventory control and spares management. 39 cadets of the logistics branch would be commissioned today. The accounts branch is responsible for the pay and allowances of all personnel posted at the stations. The accounts branch is responsible for the efficient financial management of all the funds. Today, 19 cadets of the accounts branch would be commissioned.
Ladies and gentlemen, Mrs. Sunita Srinivas, President Airforce Family Welfare Association Local, has arrived. She is being received by Mrs. Himangi Joshi. The combined graduation parade takes place twice a year at the Air Force Academy. The President's Commission is awarded to the cadets of various branches on successful completion of their training during this combined graduation parade. The major activities of the combined graduation parade are to present arms to the reviewing officer and inspection of the parade by reviewing officer. This is followed by this commissioning ceremony, felicitation of award winners, oath-taking ceremony and the reviewing officer's address. After presenting the final general salute, the newly commissioned officers would march past the days in a slow march. As they march past the days, they offer their first salute to the reviewing officer. This marks the culmination of the combined graduation parade. देवियों एवं सज्जनों, एयर मार्शल एस श्रीनिवास विशिष्ट सेवा मेडल कमांडेंट वायुसेना अकादमी का आगमन हो रहा है। Ladies and gentlemen, Air Marshal S. Srinivas, Vishisht Seva Medal, Commandant, Air Force Academy, has arrived. He is being received by Deputy Commandant, Air Force Academy. देवियों एवं सज्जनों, दीक्षांत परेड एक कैडेट के प्रशिक्षण के दौरान और उसके जीवन का एक यादगार अवसर है। दीक्षांत परेड वायुसेना अकादमी में दिए जाने वाले प्रशिक्षण के संपन्न होने का प्रमाण देती है, जिसके बाद एक कैडेट एक काबिल वायुसेना अफसर के रूप में कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। आप सभी के समक्ष प्रस्तुत परेड में मौजूद कैडेट्स को विंग कमांडर के श्रीनिवासन, सीनियर इंस्ट्रक्टर आउटडोर ट्रेनिंग और वारंट ऑफिसर बीएस यादव, वारंट ऑफिसर इंचार्ज आउटडोर ट्रेनिंग के नेतृत्व में आउटडोर ट्रेनिंग के काबिल दल ने प्रशिक्षित किया है। Ladies and gentlemen, Mrs. Hyacinth May Radish, President Afwa Regional, has arrived. She is being received
by Mrs. Sunita Srinivas. आज परेड में नंबर 1 और 3 वायुसेना के बैंड मौजूद हैं, जिसका नेतृत्व जूनियर वारंट ऑफिसर पारसनाथ शर्मा कर रहे हैं। वे एक क्वालिफाइड ड्रम मेजर हैं। वे 2010 से गणतंत्र दिवस परेड में बैंड कंटिंजेंट का नेतृत्व कर रहे हैं। इन्होंने श्रीलंका, बांग्लादेश और रशिया में इंटरनेशनल मिलिट्री म्यूजिक फेस्टिवल एंड टैटो में भाग लिया है। बैंड आज विशेष रूप से कार्यक्रम के लिए चुनी गई चुनिंदा सैन्य धुनें बजाएगा। शुरुआत में आपको लड़ाकू और एयरफोर्स कलर की धुन सुनाई दी। इसके अलावा आप इवनिंग स्टार, विजय भारत, ट्वाइलाइट, वायु शक्ति, बेनिहाल, एयर बैटल और एस्ट्रोनॉट भी सुन सकेंगे। नवनियुक्त अधिकारी आनंद लोक की धुन पर, जो सैनिकों की एक परिचित धुन है, धीरे चाल में मार्च करेंगे। अंत में सारे जहां से अच्छा की धुन पर बैंड मार्च करेगा। देवियों एवं सज्जनों, एयर मार्शल आर रधीश अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ प्रशिक्षण कमान का आगमन हो रहा है। Ladies and gentlemen, Air Marshal R. Radish, Ati Vishishta Seva Medal, Vayu Sena Medal, Air Officer Commanding in Chief Training Command has arrived. He is being received by Commandant Air Force Academy. आइए अब बताते हैं इस परेड में दिए जाने वाले पुरस्कारों के बारे में, ताकि आप उनके महत्व से अवगत हों। प्रेसिडेंट्स प्लाक, यह पुरस्कार पायलट कोर्स और ग्राउंड ड्यूटी कोर्स में पहले प्रशिक्षु को दिया जाता है। कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड के दौरान पायलट कोर्स से फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट घोषित किए जाने वाले कैडेट को चीफ ऑफ द एयर स्टाफ स्वॉर्ड ऑफ ऑनर समीक्षा अधिकारी द्वारा प्रदान करके सम्मानित किया जाता है। Ladies and gentlemen, Mrs. Neeta Chaudhary, President AFWA, has arrived. She is being received by Mrs. Hyacinth Radish and Mrs. Sunita Srinivas.
Ladies and gentlemen, for over 9 decades, the Indian Air Force has relentlessly operated in peace and war and never let its guard down. We, the Air Warriors, are always prepared to defend our skies each and every time. Right in front is written the vision statement of the Indian Air Force: People first, mission always. The vision statement underscores the importance that Indian Air Force places in its personnel, as it is the man or woman behind the machine who would eventually decide the outcome of any operational endeavor. While induction of the state-of-the-art equipment and systems upgrades the combat potential of Indian Air Force, our people remain our most valuable asset and the biggest strength. As the cadets would be commissioned shortly, having gone through dedicated training and mentoring, it's their firm belief that each one of them has a duty to care and look after the people placed under their charge. देवियों एवं सज्जनों, एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, एडीसी वायुसेना अध्यक्ष का आगमन हो रहा है। Ladies and gentlemen, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary, Param Vishishta Seva Medal, Ati Vishishta Seva Medal, Vayu Sena Medal, ADC, Chief of the Air Staff has arrived. He is being received by the Air Officer Commanding-in-Chief Training Command and Commandant, Air Force Academy. Ladies and gentlemen, you would be aware of the creation of a weapons systems branch for officers in the Indian Air Force, as was announced by the Chief of the Air Staff during the Air Force Day celebrations at Chandigarh last year. This is Indian Air Force's new operational branch since independence, and we are proud to inform you that Air Force Academy would commence training cadets of this branch from January 2024. The officers of the Weapons Systems branch would be commissioned next year in December 2024 and would go on to immensely enhance the war-fighting capability of the Indian Air Force. Ladies and gentlemen, we would now like to apprise you of the sequence of flypast for today's event. As the parade presents arms to the reviewing officer, 3 Pilatus PC-7 Mark II aircraft led by Squadron Leader Jakhad will fly past. Later, 3 Chetak helicopters led by Wing Commander Arunima will give an airborne salute when the Nishan Toli passes by the dais.
when the parade presents arms once again in reviewing order. 3 Pilatus PC-7 aircraft led by Squadron Leader Jakhad would be flying past. As the Nishan Toli is marched out, 3 Hawk aircraft led by Squadron Leader Hoysel will fly past. After their commissioning, as the first rank of officers approaches the dais to salute the reviewing officer, you will see 3 Kiran aircraft fly past in formation, and as the last rank of the officers approaches the dais, 3 Hawk aircraft will fly past in formation. Today's fly past is being coordinated and supervised by Wing Commander Gaurav Raturi, Squadron Leader Tarun Dhote, and Junior Warrant Officer B.V. Brahmaji. देवियों और सज्जनों, आज के हमारे समीक्षा अधिकारी भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का आगमन हो रहा है। Ladies and gentlemen, the reviewing officer for today's parade, Honorable Raksha Mantri of India, Shri Rajnath Singh, has arrived. The Honorable Minister is being received by Chief of the Air Staff, Air Officer Commanding in Chief Training Command, and Commandant Air Force Academy. दीक्षांत परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। The Honorable Minister will now inspect the graduation parade. श्री राजनाथ सिंह का जन्म 10 जुलाई 1951 को ग्राम भबौरा, तहसील चकिया, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश में एक किसान परिवार में हुआ। इन्होंने अपनी बुनियादी शिक्षा गांव में प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से एमएससी फिजिक्स की डिग्री हासिल की। बाद में इन्होंने केबी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में भौतिक विज्ञान व्याख्याता के रूप में काम किया। श्री राजनाथ सिंह 1969 से 1971 तक एबीवीपी गोरखपुर संभाग के संगठनात्मक सचिव रहे। वे साल 1972 में मिर्जापुर शहर के आरएसएस महासचिव बने। इन्होंने साल 1974 में राजनीति में प्रवेश किया
और साल 1977 में उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में विधायक के रूप में चुने गए। साल 1988 में वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए एमएलसी चुने गए। साल 1991 में वे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री बने। साल 1994 में वह राज्यसभा के सदस्य बने। 22 नवंबर 1999 को वह केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री बने। इस अवधि के दौरान इन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम शुरू करने का अवसर मिला। यह कार्यक्रम श्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। 28 अक्टूबर 2000 को वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 2 बार बाराबंकी की हैदरगढ़ सीट से विधायक निर्वाचित हुए। 24 मई 2003 को वह केंद्रीय कृषि मंत्री बने और उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बने। इन्होंने देश में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों को उठाने के लिए भारत सुरक्षा यात्रा भी शुरू की, जिसमें इन्होंने कई राज्यों का दौरा किया। Now, introducing you to the parade commanders. The parade adjutant is Flight Cadet Siddhant Singh Thakur. Squadron commander of number 1 squadron, which is being reviewed now, is Flight Cadet Nairuth Reddy. Squadron commander of number 2 squadron is Flight Cadet Karmanya Farshwal. The Nishan Toli is being led by Flight Cadet Abhinav Gorsi. Squadron commander of number 3 squadron is Flight Cadet Ria Mishra. Squadron commander of number 4 squadron is Flight Cadet Meva Singh Taliwal. श्री राजनाथ सिंह ने 31 दिसंबर 2005 से 19 दिसंबर 2009 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला। ये मई 2009 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से सांसद चुने गए। 26 मई 2014 को श्री राजनाथ सिंह ने भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में शपथ ली और 30 मई 2019 तक इस पद पर काम किया। 31 मई 2019 से ये भारत के रक्षा मंत्रालय में रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं। रक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने विभिन्न विभागों और क्षेत्रीय संचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पहल की। भारतीय सेना की सैन्य पुलिस कोर में महिलाओं को सैनिक रूप में शामिल करने का प्रस्ताव इनके द्वारा लिया गया था और कुल 1700 महिला सैन्य कर्मियों की भर्ती करने का निर्णय भी इनके नेतृत्व में लिया गया था। रक्षा मंत्री का पद संभालने के बाद से एसएससी में महिला अधिकारियों का कार्यकाल 10 साल से बढ़ाकर 14 साल करने और सेना में उनकी पदोन्नति की संभावनाओं में सुधार जैसे कदम भी उठाए गए हैं। रक्षा मंत्री के रूप में ये भारतीय सशस्त्र बलों में नारी शक्ति को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की भावना को बढ़ावा देते हुए श्री राजनाथ सिंह ने अगली पीढ़ी के कार्वेट, हवाई प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, टैंक इंजन और रडार सहित 108 सैन्य हथियारों और प्रणालियों का निर्माण भारत में करने के लिए कई कदम उठाए। देवियों एवं सज्जनों, इनका सपना भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखना है जो दुनिया को न केवल आर्थिक क्षेत्रों में बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करे। सात परेड को मंच से गुजरने की आज्ञा दे श्रीमान। Line,
Now you can see the parade commander marching towards the left to take his position beside the parade adjutant. दाहिने दिशा दिल की बोल दाहिने बंद जैसे ये कैडेट्स अपनी टोलियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उससे एक विचार आता है, हर शिखर अकेले हासिल नहीं होता, साथ मिलकर चलने का साहस कोई गैर नहीं रखता। एक फौजी की पहचान सिर्फ उसके नाम से नहीं होती देवियों और सज्जनों, कभी पूछ कर देखो तो अपनी टुकड़ी से ही वे अपना नाम और अपने कर्मों से अपनी टुकड़ी की पहचान बतलाते हैं। देवियों और सज्जनों, परेड में शामिल कैडेट अब आपके सामने मार्च करते हुए अपने कौशल, तालमेल और अनुशासन का प्रदर्शन करेंगे। Ladies and gentlemen, when the Nishan Toli passes in front of you, all are requested to rise and those in uniform to salute. देवियों एवं सज्जनों, जब निशान टोली आपके सामने से गुजरती है तो आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और जो वर्दी में हैं वे सलामी दें। देवियों और सज्जनों, मंच के आगे गुजरने से पहले परेड निकट लाइन से खुली लाइन में बदल जाएगी और धीमी मार्च करते हुए माननीय रक्षा मंत्री का अभिवंदन करेगी।
decision to close order and continue with quick march to reposition in front of the dais. The band is now marching in front of you, playing the tune Vayu Shakti, composed by Air Veteran Wing Commander P.K. Jena, Vishish Seva Medal. Ladies and gentlemen, the confidence and pride in the marching contingents is an unsaid word exhibiting the thought, together we march to a new life, each step ahead of the other. Not looking back, but still remembering our roots, looking ahead to inculcate in others what we have learned in here. As the parade contingent marches by, arms swinging in synchronization, heels digging in, we are proud of the burning desire that the training at the Air Force Academy has kindled in these young cadets. During their training at the Air Force Academy, the trainees being commissioned today have imbibed knowledge, leadership skills, and value systems. Most importantly, they have been trained to lead with professionalism and dedication. This is in accordance with the mission of the Air Force Academy to train air warriors of highest professional, intellectual, physical and moral caliber for a lifetime of service to the Indian Air Force and the nation. Today, these young entrants who have joined from the National Defense Academy and universities all over the country would be commissioned as worthy Indian Air Force officers who would go on to achieve the Indian Air Force motto of touch the sky with glory. After the parade halts, it would present general salute to the Honorable Raksha Mantri in a reviewing order.
समीक्षा क्रम में आगे बढ़ेगी। मैच से तेज चल। Dixon Bread General Salute Salame Shas Dixon Bread Baju Sas Dixon Bread Bhumi Sas दीक्षांत परेड आयोगदान पुरस्कार वितरण और शपथ ग्रहण के लिए तैयार है श्रीमान। देवियों एवं सज्जनों, अब आप देख सकते हैं कैडेट्स आगे बढ़ते हुए पदवी अनुदान के लिए 4 अनुभागों में मंच के सामने खड़े होंगे। वहीं आपकी दाहिनी ओर से जूनियर कैडेट्स एयर क्रू बैचेस लिए और कमीशन होने वाले कैडेट्स के कैप से सफेद बैंड और कंधे से सफेद फ्लैशेस हटाने के लिए अपना स्थान ले रहे हैं। आज कैडेट्स के 4 अनुभागों को माननीय रक्षा मंत्री, वायुसेना अध्यक्ष, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ प्रशिक्षण कमांड और कमांडेंट वायुसेना अकादमी द्वारा पदवी अनुदान की जाएगी। The trainees being commissioned today are Flying Officer Atul Prakash, Flying Officer Pranav B.S., Flying Officer Pranati S. Bargi, Flying Officer Nairut Reddy, Flying Officer Mannat Sarao, Flying Officer Ashutosh Dash, Flying Officer Abhishek Tiwari, Flying Officer Mayank Lamba, Flying Officer Nikhil, Flying Officer Parakram Singh Sankla, Flying Officer Yuvraj Singh Waghela, Flying Officer Charush Khurana, Flying Officer Tarun Pandit, Flying Officer Garv Saini, Flying Officer A. Vijay Mudalyar, Flying Officer Vishwan Bharadwaj, Flying Officer Vineet V, Flying Officer Ankit Kumar, Flying Officer Navneet Yadav, Flying Officer Varun Singh, Flying Officer Arshdeep Singh, Flying Officer Navyug Gangwar, Flying Officer Avni Gupta, Flying Officer Rohit, Flying Officer Mohit A, Flying Officer Sonali Santosh, Flying Officer Raghunandan Singh, Flying Officer Yashasvi Joshi, Flying Officer Navroop Singh, Flying Officer Neeraj Baseda, Flying Officer Pranav Belur, Flying Officer Abhishek Singh, Flying Officer Kavish Gupta, Flying Officer Sai Sawant, Flying Officer Arjun Mahajan, Flying Officer Shubham Kumar, Flying Officer Gagan Sharma, Flying Officer Prakhar Mishra, अगली लाइन बरकरार Flying Officer Meva Singh Taliwal, Flying Officer Harita Bharat, Flying Officer Prachi Sharma, Flying Officer Kriti Daksh, Flying Officer Ibn John, Flying Officer Parth Kanungo,
Flying Officer Venkat Sai Majji. Flying Officer Surya Kiran. Flying Officer UJ Arun Kumar. Flying Officer Aditya Pundir. Flying Officer Deep Jyoti Roy. Flying Officer Anand Tilaganji. Flying Officer Rahul. Flying Officer Ritvik Mahajan. Flying Officer Heath Nikhil Gandhi. Flying Officer Sahil Patil. Flying Officer Dheeraj Kumar Chaube. Flying Officer Aditya Kumar Rajawat. Flying Officer Sandeep Singh. Flying Officer Dhananjay Singh. Flying Officer Nilesh Kumar. Flying Officer Deepak Dahiya. Flying Officer Bharat Singh Kumaiya. Flying Officer Vikram Verma. Flying Officer Ritvik Sharma. Flying Officer Vineet Dul. Flying Officer Vedant Pavde. Flying Officer Ayan Haider Zaidi. Flying Officer Pragya Pant. Flying Officer Prateep Kumar V. Flying Officer Brahmappa YS. Flying Officer Vijay Singh. Flying Officer Amit Kumar Joshi. Flying Officer Ajay Thandayak. Flying Officer Mohit Pawar. Madhya line! Mark but Flying Officer Harjot Singh. Flying Officer Jyoti. Flying Officer Siddhant Singh Thakur. Flying Officer Aryaputta S. Ranjan. Flying Officer Mars Malik. Flying Officer Anurag Besla. Flying Officer Gaurav Khatri. Flying Officer Adarsh. Flying Officer Divyam Dhawan. Flying Officer Tarun Jatrana. Flying Officer Harsh Pratap Singh. Flying Officer P. Nikhil. Flying Officer Aniket Malik. Flying Officer Ashish Kumar. Flying Officer Vinay Kumar. Flying Officer Nikhil Pandey. Flying Officer Rohit Badarwal. Flying Officer Tushar Rana. Flying Officer Satyam Kumar Pandey. Flying Officer Pawan Krishna. Flying Officer Aditya Kumar Singh. Flying Officer Sahil Chadha. Flying Officer Chah Mohammed. Flying Officer Joseph NDB. Flying Officer Satyajit Chattopadhyay. Flying Officer Ujjwal Ranjan. Flying Officer Pranshu Agarwal. Flying Officer Devesh Kumar Singh. Flying Officer Narsimhan. Flying Officer Kevin Jose. Flying Officer Vivek Dhiman. Flying Officer Pradyot Pandey. Flying Officer Dipanshu Sharma. Flying Officer Geetika Upadhyay. Flying Officer Anjali Rana. Flying Officer Ajay Singh Brar. Flying Officer Shivanshi Pathak. Flying Officer Puneet Tiwari. Flying Officer Sachin Tyagi. Flying Officer Harsh Rajyan. Flying Officer Saksham Singh Deswal. Flying Officer Aditya Narayan Pandey. Flying Officer Ninad Dandavate. Flying Officer Divyansh Sharma. Flying Officer Sagar Jain. Flying Officer Hitesh Pant. Flying Officer Saloni Suhag. Flying Officer Amrinder Jeet Singh. Flying Officer Tanushka Singh. Flying Officer Adman Singh Lamba. Flying Officer Himanshu Singh. Flying Officer Avik Dhama. Flying Officer Kishore Kumar M. Flying Officer Aditya Gupta. Flying Officer Bhanu Prakash. Flying Officer Ayush Kumar. Flying Officer Sachin Kumar Soni. Flying Officer Sohan Goswami. Flying Officer Ajay Vikram Singh Bisht. Flying Officer Mansi Ghansala. Flying Officer Gurpreet Singh. Flying Officer Pradyumn Patel. Flying Officer Sachin Yadav. Flying Officer Siddharth Mohan. Flying Officer T. Amit Reddy. Flying Officer Swarnim Sinha. Flying Officer Harshit Kumar Tiwari. Flying Officer Dishant Solat. Flying Officer Lata Kaushik. Flying Officer Sumit Negi. Flying Officer Riya Mishra. Flying Officer Khushi Sachdev. Flying Officer Karmanya Fashwal. Flying Officer Sonika Jatrana. Flying Officer Suraj Uday Madangiri. Flying Officer M. Chandrasekhar. Flying Officer Ajay Kataria. Flying Officer Anirudh RL. Flying Officer Deepu Singh. Flying Officer Ryan Hendricks. Flying Officer Asif Hussain. Flying Officer Karanjot Singh. Flying Officer Manivannan G. Flying Officer Prasanna Kumar Manna. Flying Officer Harsh Malwal. Flying Officer Pat Jakmola. Flying Officer C. Karthik Reddy. Flying Officer Gokul Kumar Patil. Flying Officer Tanmay Patil. Flying Officer Ashutosh Pandey. Flying Officer Yashima Ahlawat. Flying Officer Devesh Budhori. Flying Officer Sudhanshu Gupta. Flying Officer Abhishek Kumar. Flying Officer Shailesh Bisht. Flying Officer Rohan Paul. Flying Officer Neeraj Tiwari. Flying Officer Abhishek Kumar Singh. Flying Officer Amar Upadhyay. Flying Officer Divyanshu Jangir. Flying Officer Pradyumn Asthana. Flying Officer Rohan Pethe. Flying Officer Kajal Agarwal. Flying Officer Chandan.
Matilai! Barkaman! Flying Officer Amartya Dhami. Flying Officer Siddharth Karel. Flying Officer Sriraj V. Flying Officer Nitin Singh Bisht. Flying Officer Bhanu Sharma. Flying Officer Aman Verma. Flying Officer Krishan Nandan Mondal. Flying Officer Ajit Kumar SS. Flying Officer Ashish Verma. Flying Officer Hardik Bhatt. Flying Officer Himanshu. Flying Officer Sravan. Flying Officer Vipin Kumar Malik. Flying Officer Paritosh Sharma. Flying Officer Hitesh Sontake. Flying Officer Harmeet Thukran. Flying Officer Rishabh Dubey. Flying Officer Abhijit. Flying Officer Himanshu Sharma. Flying Officer Sitanshu Kochar. Flying Officer Karan Sobti. Flying Officer Rohit Yadav. Flying Officer Sitanshu Mishra. Flying Officer Shubham Sharma. Flying Officer Himanshu Bhavsar. Flying Officer Kanishk Mishra. Flying Officer Santosh Kumar. Flying Officer Rahul Dangi. Flying Officer APS Bhadoria. Flying Officer Sarthak Trigun. Flying Officer Nitin Sangwan. Flying Officer Arjun Singh Jaswal. Flying Officer Aditya Mohanty. Flying Officer Tanya Singh. Flying Officer Basavraj G. Now, the Honorable Raksha Mantri and Chief of the Air Staff would award wings to 8 officers of the Indian Navy, 9 officers of the Indian Coast Guard, and 2 foreign trainees from Vietnam. Lieutenant Shubham Agarwal. Assistant Commandant Bhushan Pawar. Lieutenant Akash Kumar Mehta. Assistant Commandant Anish Kumar Daksh. Lieutenant Gaurav Pratap Singh. Assistant Commandant Abhishek Sangwan. Lieutenant Galio MacLean Lima. Assistant Commandant Siddhant Dhondial. Sub-Lieutenant Surender R. Deputy Commandant Sumit Kumar. Sub-Lieutenant Pugalmati M. Assistant Commandant Surikant Butola. Sub-Lieutenant Tushar Malik. Assistant Commandant Vishal Chauhan. Lieutenant Aditya. Assistant Commandant Arjun Kalia. Flight Cadet Wu Kha Thai from Vietnam. Assistant Commandant Ram Prabhu J. Flight Cadet Pham Tra An from Vietnam. Ladies and gentlemen, we now come to the crowning moment for individual achievers, wherein the Honorable Raksha Mantri would felicitate the award winners. President's plaque, first in order of merit, Flying Branch, goes to Flying Officer Atul Prakash. The Sword of Honor goes to Flying Officer Atul Prakash. President's plaque, first in order of merit, Ground Duty Officer scores goes to Flying Officer
Amrinderjeet Singh of Accounts Branch. The Commandant, Air Force Academy, will now administer the oath to the newly commissioned officers. आप सब मेरे मैं बोलने के पश्चात आप सब मेरे मैं बोलने के पश्चात अपना रैंक और नाम बोलें और मेरे साथ दोहराएं। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और वफादारी रखूंगा और मैं भारतीय संघ की भारतीय वायुसेना में सेवा के प्रति वचनबद्ध रूप में ईमानदारी और विश्वसनीयता के साथ सेवा करूंगा और जहां भी आदेश किया जाए हवाई, भूमि या समुद्री मार्ग से जाऊंगा और अपनी जान की आखिरी सांस तक भारत के राष्ट्रपति और मेरे ऊपर रखे गए किसी भी अफसर के सभी आदेशों को मानूंगा और उनका पालन करूंगा। आपके हिफाजत के लिए तैयार है श्रीमान। Ladies and gentlemen, the Honorable Raksha Mantri will now address the parade. Air Chief Marshal, we are Chaudhary Chief of Air Staff. Air Marshal are Radhis, AOC in C, Training Command. Air Marshal Yes Srinivas, Commandant Air Force Academy. वायुसेना अकेडमी के सभी प्रतिभाशाली कैडेट्स और उनके गौरवान्वित माता पिता, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, आज भारतीय वायुसेना एकेडमी में 212वें कोर्स की संयुक्त स्नातक परेड की समीक्षा करना सचमुच हमारे लिए यह एक गौरव का क्षण है। सबसे पहले मैं इस शानदार परेड में शामिल सभी ट्रेनीज को तहे दिल हार्दिक बधाई देता हूं। आज की यह परेड दिखाती है कि इसके पीछे आपने कितनी कड़ी मेहनत की है और कितना आपने अभ्यास किया है। इसके साथ ही मैं आज के पुरस्कार विजेताओं को भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन आप सभी के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। आज से आप अपने जीवन की एक नई यात्रा पर निकलेंगे। यहां से आपके जीवन को एक नई दिशा मिलने वाली है। यह आपके लिए एक बड़ा अवसर है ही, साथ ही साथ यह आपके माता पिता, मित्रों और आपके प्रशिक्षकों के लिए भी एक बेहद गौरव का क्षण है। इसलिए मैं समझता हूं इस अवसर पर आपके साथ साथ ये सभी बधाई के पात्र हैं। साथियों, आज मैं आप सबके बीच इसलिए आया हूं ताकि मैं रक्षा मंत्रालय के इस उत्कृष्ट परिवार में शामिल होने पर आपको हार्दिक बधाई दे सकूं
और आपसे दो बातें भी कर सकूं। मैं भले ही एक रक्षा मंत्री के रूप में यहां पर आप सबके बीच आया हूं, लेकिन चूंकि मैं उम्र में आप सबसे बड़ा हूं, इसलिए मैं कुछ देर तक आप सभी साथियों से एक अभिभावक के रूप में कुछ बातें करना चाहूंगा। साथियों, आज से आप सब कैडेट से ऑफिसर बन रहे हैं। एक कैडेट और एक ऑफिसर के जीवन में बड़ा अंतर होता है। जब आप कैडेट थे तब आपके जो इंस्ट्रक्टर थे या फिर जो प्रशिक्षक थे, वे पहले आपको ट्रेनिंग देते थे, पहले आपको लेसन पढ़ाते थे, फिर उस बेस पर आपका इवैल्यूएशन होता था या आपका एग्जाम होता था। लेकिन अब जब आप अफसर बनकर बाहर की दुनिया में जाएंगे तो वहां स्थिति बिल्कुल अलग होगी। वहां एग्जाम पहले होगा और उस एग्जाम के बाद आपकी गलतियों से आपको लेसन मिलेगा। उस रियल लाइफ में आप सबक बाद में सीखेंगे, आप परीक्षा पहले देंगे। इसलिए मुझे लगता है साथियों कि वह जो आपकी केयर फ्री लाइफ थी वह अब यहां से समाप्त हो रही है, क्योंकि अब तक इंस्ट्रक्टर थे जो आपको गाइड करते थे। उस इंस्ट्रक्टर के साथ या उस टीचर के साथ आपका आत्मीय रिश्ता था, लेकिन अब आगे से आपके जीवन का इंस्ट्रक्टर भी बदलने वाला है। जब आपके सीनियर ऑफिसर या फिर आपके ट्रेनर आपके इंस्ट्रक्टर नहीं होंगे, बल्कि अब जिंदगी और खुला आसमान आपके इंस्ट्रक्टर होंगे। अब तक आप अपने टीचर से, अपने इंस्ट्रक्टर से, अपने माता पिता से, अपने परिवार से और अपने समाज से कुछ सीखते थे, लेकिन अब यहां से आपको आपकी जिंदगी ही आपको सिखाएगी। साथियों, मैं जब से यहां आया हूं तब से मैं आपके अंदर की ऊर्जा और जोश को देख पा रहा हूं, और ऐसा होता भी है। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि जो कैडेट्स होते हैं बड़े इनर्जेटिक होते हैं, उनके अंदर नए विचारों के प्रति एक खुलापन होता है, उनके अंदर आइडियलिज्म होता है। लेकिन साथ ही मैंने अपने 50 वर्षों के सार्वजनिक जीवन के अनुभव में यह बात भी देखी है कि चाहे वह आर्म फोर्सेस हो, राजनीति हो, कला हो या फिर कोई और सार्वजनिक क्षेत्र हो, जैसे जैसे आप वास्तविकता के धरातल पर आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे कुछ लोगों के अंदर का आइडियलिज्म यह धुंधला पड़ने लगता है। आज आप अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से, अपने माता पिता से मिलने के लिए बहुत उत्सुक होंगे। आप नई एनर्जी से भरे हुए हैं। आपका पार्टी करने का भी निश्चित रूप से मन होगा। आपका लोगों से बात करने की भी इच्छा होगी। आपके लिए आज का दिन ये बेहद खुशी का क्षण है। इसलिए हो सकता है कि मेरी कई बातों को आप इतने ध्यान से न सुन पाएं। हालांकि आपकी इस खुशी के क्षण में मैं खुद भी इस भाषण को बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन एक बात अवश्य मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। आप मेरे पूरे भाषण को भूल भी जाएं, पर सिर्फ एक बात याद रखें तो भी मैं अपना यहां पर आना सफल मानूंगा। आपके अंदर नई सोच और नए विचारों के प्रति जो खुलापन है तथा जो आपका आइडियलिज्म है, उसे किसी भी हालत में आप खोइएगा मत। यह मेरा आप सबको सुझाव है। साथियों, रोज सुबह जब आप अपने ऑफिस में जाएं या फिर अपने प्लेन को उड़ाएं, तो एक पल के लिए ही सही आप आज की इस पासिंग आउट परेड को आप जरूर याद रखिएगा। यह मैं आपसे कहना चाहूंगा। आप हमारी बातचीत का यह अंश जरूर याद रखिएगा कि हमें आपने अपने आइडियलिज्म को किसी भी सूरत में खोना नहीं है। आज आप इतने इनर्जेटिक हैं, रोमांचित हैं, खुश हैं। न्यू थिंकिंग एवं आइडियलिज्म से पूरी तरह से आप लबरेज हैं। इस खुशी और एनर्जी, इस आइडियलिज्म को आप 1 मिनट के लिए भी अपने रोज के काम से पहले याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप अपना आइडियलिज्म
कभी नहीं खोएंगे और आपके अंदर कैडेट की जो ऊर्जा है, जो नयापन है, जो आइडियलिज्म है, वो हमेशा स्वाभाविक रूप से यह बनी रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप यह बात जरूर याद रखेंगे। साथियों, आर्म्ड फोर्सेस में ट्रेडिशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह टाइम टेस्टेड होती है। एक लंबे समय तक इसने यूजफुल पर्पज को सर्व किया होता है, इसलिए ट्रेडिशन को उचित महत्व देना यह भी अति आवश्यक है। लेकिन एक विशेष बात की ओर हमें ध्यान देना आवश्यक है कि लंबे समय तक अगर हम बिना सोचे समझे केवल ट्रेडिशन को ही फॉलो करते रह गए तो हमारी व्यवस्था में जड़ता यानी ऑसिफिकेशन की स्थिति स्वाभाविक रूप से आ जाती है। उस जड़ता की स्थिति से बचने के लिए तथा समय के हिसाब से तालमेल बनाने के लिए इनोवेशन का लाना यह भी बेहद आवश्यक है। इनोवेशन बदलती परिस्थितियों के अनुसार हमें तैयार करता है और चूंकि दुनिया में हर चीज लगातार परिवर्तनशील है, इसलिए हमें इनोवेशन पर भी उतना ही ध्यान देने की आवश्यकता है। ट्रेडिशन और इनोवेशन के बीच एक बैलेंस बेहद जरूरी है। यदि हम केवल ट्रेडिशन को फॉलो करते रहेंगे तो हमारी हालत उस डेड लेक की तरह हो जाएगी जिसके पानी से बदबू आने लगती है। हमें एक नदी की तरह प्रवाहमान रहना है और यदि हम नदी की तरह प्रवाहमान बने रहना चाहते हैं तो हमें ट्रेडिशन के साथ साथ इनोवेशन को भी लाना होगा। साथियों, आपने देखा होगा कि भाषा में मेटाफर का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। आप सबने हिंदी में कहावत सुनी होगी, हवा में उड़ना। सामान्य तौर पर हवा में उड़ने को बेहद नकारात्मक तरीके से देखा जाता है। इस मुहावरे का प्रयोग भी आपने कई जगह पर सुना होगा कि फला व्यक्ति बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहा है। इसका मतलब होता है कि उसका जमीन से यानी रियलिटी से कोई जुड़ाव नहीं रह गया है। आप लोगों के मामले में ऐसी स्थिति मैं मानता हूं बिल्कुल नहीं है। आप जमीन से ही उड़ के हवा में जाते हैं और हवा से वापस आप जमीन पर ही आते हैं, तो एक तरह से आप हवा में उड़ते हुए भी जमीन से जुड़े रहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हवा में भी उड़ते रहिए और जमीन से भी रिश्ता अपना बनाकर रखिए, यानी कि आप इनोवेशन भी लाइए और ट्रेडिशन को भी फॉलो करते रहिए। मुझे विश्वास है कि मेरे इन बातों पर आप सभी निश्चित रूप से विचार करेंगे। मैं अपनी तरफ से आपको आपके जीवन की आगे की यात्रा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और मुझे विश्वास है कि आप अपने माता पिता, परिवार और राष्ट्र का मस्तक सदैव ऊंचा करेंगे। इतना कहकर यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको अंत में पुनः मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Ladies and gentlemen, the band will now play the national anthem. You all are requested to stand and sing along.
शॉर्ट परेड को ले जाने की आज्ञा दे श्रीमान। शॉर्ट को ले जाओ। నా కెమెరా शॉर्ट परेड ఇది వస్తుంది इस्लाम में शॉर्ट ఆన్లైన్ లేదు అది Ladies and gentlemen, as the Nishan Toli exits from the parade ground, 3 Hawk aircraft formation will fly past from your left to right, paying tribute to the Nishan. देवियों एवं सज्जनों, जब निशान टोली आपके सामने से गुजरती है तो आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और जो वर्दी में हैं वे सलामी दें। The band is now playing Vijay Bharat, composed and arranged by late Master Warrant Officer J.A. George, Vishisht Seva Medal. Ladies and gentlemen, as the newly commissioned officers are marching out, up ahead you can see the cadets of the junior course marching in. They will form up in 2 flanks through which their senior course, which has just been commissioned, will pass.
The newly commissioned officers are taking their positions at the rear, waiting to step into their new world. Each step signifies their transformation into bold and responsible officers of the Indian Air Force, ready to serve the nation. As the newly commissioned officers pass through the formation of the junior course in slow march, they receive their first salute from their juniors. Their hearts are filled with immense pride and satisfaction for having passed the cherished values and traditions down to their juniors. With every step, they recollect their memorable stay at Air Force Academy and people associated with them in their year-long training. These are the people who have helped them to make it to this day an indelible moment for them and their families. Ladies and gentlemen, you can now see the officers marching towards the dais. As they march past the saluting dais, they would extend their first salute as officers to the reviewing officer who has commissioned them. Ladies and gentlemen, as the newly commissioned officers approach the dais, may I direct your attention to the 3 Kiran aircraft formation led by Group Captain Yasir Farooqi approaching from straight ahead. इस समय प्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। ना हाथ एक शस्त्र हो, ना हाथ एक अस्त्र हो, ना अन्न वीर वस्त्र हो, हटो नहीं, डरो नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए जन बिखर, रुको नहीं, झुको नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो।
घटा घिरी अटूट हो, अधर्म काल कूट हो, वहीं सुधा का घूंट हो, जिए चलो मरे चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। गगन उगलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपने फाग हो, अड़ो वहीं गड़ो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। चलो नई मिसाल हो, जलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। ये पंक्तियां यह संदेश देती हैं कि इन नवनियुक्त अधिकारियों के लिए आज की ये शहर इन नई पंछियों के लिए एक नई उड़ान लेकर आई है। ये वीर सपूत अपने भाग्य की ओर चल पड़े हैं और कहते हैं जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। मंजिल के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। Ladies and gentlemen, may I now direct your attention to the three Hawk aircraft formation led by squadron leader Hoysel approaching from straight ahead. On this combined graduation parade of 212 course, it is indeed worth saying, each step landing us closer to our dream. Today passing through these portals is the young blood of the world's best aviators. Over an year spent in the academy and they are ready for the next transformation. देवियों एवं सज्जनों, आज ये नवनियुक्त अधिकारी एक नए हौसले के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इनके इस जुनून को देखकर ये पंक्तियां याद आती हैं। हर शिखर को पार करने का प्रण लिए, हर चुनौती का डट कर सामना करने का जोश लिए, चल पड़े हैं वीर सपूत एक नई राह पर, चल पड़े हैं लगाकर पंख एक नए आसमान की तलाश पर। After the parade, you will be treated by a captivating low-level aerobatic display by Pilatus PC-7 Mark II aircraft. This will be followed by formation displays by the graceful Sarang helicopter display team in advanced light helicopters, and ladies and gentlemen, by the enthralling Surya Kiran aerobatic team in the Hawk aircraft. Lastly, you will witness a breathtaking and thunderous display by Su-30 MKI. Ladies and gentlemen, we now introduce to you the Pilatus PC-7 Mark II aircraft. The Pilatus PC-7 Mark II trainer is a low-wing tandem seat training aircraft manufactured by Pilatus of Switzerland. The aircraft is capable of all basic training functions including aerobatics, instrument, tactical and night flying. Approximately 25 air forces around the world use variants of the aircraft for their ab initio training. The PC-7 Mark II was inducted into the Indian Air Force in 2013 to train ab initios at Air Force Academy, Hyderabad. This is a single-engine turboprop aircraft with a full glass cockpit. Ladies and gentlemen, look to your left as the aircraft fly past in front of you at 220 knots and position for the first maneuver.
Today's display is being carried out by squad leader Vaibhav Solanki, nicknamed Soul, and squad leader Gaurav Chau. At 220 knots for the next maneuver. Ladies and gentlemen, that was the half Cuban. Nicely done. Look ahead and see him tipping over to left and descending while accelerating towards us. He is now positioning for a hard turn in which the pilot undergoes gravitational force up to 4G. Watch carefully the path of aircraft and you shall notice the pilot making a brisk turn, showcasing the agility of this marvelous machine. Ladies and gentlemen, now shift your gaze to the extreme right. You can see the aircraft coming in straight to carry out a knife edge. The aircraft cuts through the air like a knife with a 90-degree angle of bank. Ladies and gentlemen, now be prepared for a stunning surprise as he runs in from your left. And the pilot is flying inverted. As the pilots say, you look up at them and they look up at you. Finally, from your right, the aircraft is flying in as Sol and Chow will present a final salute their way, carrying out a role in front of the Honorable Raksha Mantri. As Sol and Chow take your leave, ladies and gentlemen, may we have a huge round of applause for the basic trainer aircraft of the Indian Air Force, the Pilatus PC-7 Mark II. Ladies and gentlemen, after the marvelous aerobatics of PC-7 Mark II aircraft, I now hand over the mic to the Sarang commentator, Flight Lieutenant Pallavi Sangwan, to take us through the thrilling display by the Sarang helicopter display team. जय हिंद, सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों। अभी आप सबने देखा भारतीय वायुसेना के पिलेटस विमान के करतबों को, और अब तैयार हो जाइए और भी अद्भुत प्रदर्शन के लिए, क्योंकि कुछ ही देर में आप सबको मंत्रमुग्ध करने और आज के इस ऐतिहासिक दिन की गरिमा बढ़ाने आ रहे हैं हमारे सारंग दल के हेलीकॉप्टर। And we promise you that this display will become a part of your most cherished memories.
आज का यह दिन सभी अधिकारियों और उनके गौरवान्वित माता पिता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दिन इनकी कड़ी मेहनत, कभी ना हार मानने का जज्बा और बेशक इस संस्था की सफलता का प्रतीक है। So let's celebrate this day in Sarang way. We can assure you that this will leave you with a gush of visual sensation like never before. In no time, our beautiful birds will be right in front of you. As our pilots are all set to paint the sky in Sarang colors and ready to dazzle this arena with overwhelming display of skill, grace and beauty. So ladies and gentlemen, get ready, hold tight, and please welcome the brand ambassadors of the Indian Air Force, the Sarang Helicopter Display Team. On this momentous occasion of passing out parade of 212 course. फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं सारंग 1, जिसमें उड़ान भर रहे हैं टीम के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन संतोष कुमार मिश्रा। उनके ठीक पीछे सारंग 5, उनके पीछे सारंग 4, बाईं ओर सारंग 2 और दाहिनी ओर उड़ान भर रहे हैं हमारे सारंग 3। आज सारंग 1 के सह पायलट हैं स्क्वाड्रन लीडर सचिन गोविंद। स्वदेशीकरण के माध्यम से आधुनिकीकरण, स्वदेशी रूप से निर्मित प्लेटफॉर्मों के संचालन और आत्मनिर्भरता का समर्थन करने की हमारी खोज का परिणाम है। भारतीय वायुसेना ने हमेशा स्वदेशी रक्षा उत्पादन शक्ति के विकास और क्षमताओं को प्रोत्साहित किया है और अब भारतीय वायुसेना की यह भव्य टीम अपनी अगली आकृति से आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए हवा में अंग्रेजी अक्षर आई का निर्माण कर आपके सामने से गुजरे। Today the co-pilot with him is Squadron Leader Avinash. Squadron Leader Karan Prabhakar is in command of Sarang 4 with his co-pilot Wing Commander Thakur Vikas Raj Singh. And our number 5 is being flown by Squadron Leader Akash with his co-pilot Squadron Leader Akshay. और अब अपनी नजरें बनाए रखें अपनी बाईं ओर, जल्द ही टीम लीडर के आदेश पर यह टीम डायमंड की आकृति में तब्दील हो जाएगी। आइए सुनते हैं लीडर की कमांड सीधी उनकी कॉकपिट से। हवा में डायमंड की यह आकृति खास हमारे चैंपियन स्क्वाड्रन क्वीन स्क्वाड्रन के लिए। Shift your gaze, ladies and gentlemen. You are in for a breathtaking surprise, and there goes.
विभिन्न राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन कर यह टीम देश के युवाओं को भारतीय वायुसेना का सदस्य होने के लिए प्रेरित करती है। इन खूबसूरत हवाई मशीनों को पूरी क्षमता से उड़ाने के साथ यह टीम एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव की योग्यता एवं पायलटों के कौशल को ही न दिखाकर यह भारतीय विमानन प्रौद्योगिकी की प्रगामी प्रवीणता को भी दर्शाती है। On this occasion, I would also like to take you back into history and tell you something about the origin of our team. On 31st January 2003, for the first time, two ALH aircraft under evaluation trials took off and performed in unison. On this historical day, the Sarang team was conceptualized. We, Sarangs, take immense pride in mentioning here that our team is presently the one and only 5-helicopter military display team in the world. The flexibility of this aircraft has been time-tested from varied operations to SWAV displays. On this note, set your gaze straight ahead as the team has rolled in for the crossover break. Time now to see these teammates in lower and closer action as the helicopters turn and bound towards each other for the vertical synchro maneuver. We call it the double arrow cross. With unwavering trust and unmatched skill, number 3 and number 4 are flying right below their pair leaders. Keep looking to your right and left as both the pairs approach each other and cross in the same vertical plane with a gap of less than 10 meters right in front of you. Look straight ahead for double arrow cross. Directions, each helicopter will cross the other, and that too in the same plane. The gap less than a second, the risk immense. But for these pilots, it's all in a day's work. Look straight ahead for level mesh. Ladies and gentlemen, Sarang is also available on social media platforms. To keep up with the latest schedule of the team, you can follow us on Instagram and Twitter handles as Sarang_IAF. And now get ready to witness the agility of the aircraft and the unmatched precision of our pilots even closer to you. So hold your breath as both pairs will close in towards each other and the pilots will execute a coordinated pitch up across each other's flight path with just a hair's breadth of separation. तो अपनी नजरें दोनों ओर बनाए रखें क्योंकि आपकी दाहिनी ओर से आ रहे हैं सारंग 1 और सारंग 3 और बाईं ओर से आगे बढ़ रहे हैं सारंग 2 और सारंग 4 लेवल क्रॉस के लिए. Astonishment to you all that while doing these daredevil maneuvers, the aircraft maintains the distance of only one rotor diameter, and such precision is the result of immense practice, training and split-second reactions the team undergoes each and every time.
ऐसा ही एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए तैयार विपरीत दिशाओं से आते हुए सारंग 3 एवं सारंग 4 एक दूसरे को तेज गति से पार कर आपके समक्ष स्टॉल टर्न करते हुए अपने सिग्नेचर मैन्यूवर का प्रदर्शन करेंगे। लुक स्ट्रेट अहेड फॉर सारंग 3 एंड सारंग 4 इन हाई स्पीड क्रॉस। Distinction that trickles on to our team as well. Coming from diverse cultural backgrounds, speaking different languages, we all work together towards our common aim of winning hearts and saving lives. Right in front, we present a beautiful pulsating heart to 212 course and their proud parents. With love, Sarangs. United Kingdom, Bahrain, Mauritius, Sri Lanka, Russia and Dubai. और अब अपनी नजरें बनाए रखें ठीक अपने सामने, क्योंकि सारंग आ रहे हैं अपने आज के आखिरी मैन्यूवर के लिए। Ladies and gentlemen, look straight ahead as the team is rolling in for the grand finale of today's display. The sarang split on the soul-lilting tune of Vande Mataram. As the formation splits, the leader will pull up to present a salute to the nation. We shall listen out for the leader's call. एकेडमी, जिसके 212वें कोर्स की कमिश्निंग को और भी यादगार बनाने आपके समक्ष आने वाली है भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हमारे कमान अधिकारी ग्रुप कैप्टन GS ढिल्लों 174 PC चिटनेस। भारतीय वायुसेना जानी जाती है अपने अनुशासन, एकाग्रता और कार्यकुशलता के लिए।
और आज सूर्य किरण एरोबैटिक टीम इसी हुनर और जोश को दर्शाएंगे आपके समक्ष हैरत अंगेज एरोबैटिक्स का प्रदर्शन करके. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम द एम्बेसडर्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, द सूर्य किरण एरोबैटिक टीम. बना चुके हैं इन डायमंड की आकृति. दिस डायमंड इज डेडिकेटेड टू द ऑफिसर्स ऑफ द 212 कोर्स. और अब ये आसमान की ऊंचाइयों को छूते भारतीय वायुसेना के आदर्श वाक्य नभ स्पृशम दीप्तम को चरितार्थ कर रहे हैं. And now diving down, they look just like shooting stars. So go ahead and make a wish because today is your lucky day. दर्शकों, अब अपनी नजरें टीम के पिछले भाग में बनाए रखें. आपको नजर आएंगे एक सदस्य फॉर्मेशन से अलग होते हुए. एंड देयर ही गोज, दैट्स आवर नंबर 7 स्क्वाड्रन लीडर चंडेल, जो कि फॉर्मेशन से अलग हो चुके हैं. मगर घबराएं नहीं, वो जल्द ही आएंगे आप सबसे मिलने. टीम अब आपकी बाईं ओर से विकसित हो रही है एक नई फॉर्मेशन में. कमिंग इन फ्रॉम योर लेफ्ट, द टीम इज नाउ रीअरेंजिंग इटसेल्फ टू रिजेंबल द लेटर वी. V is for victory and is dedicated to all the young officers who have earned their wings and stripes today. Ladies and gentlemen, from your left, here's presenting the victory formation. दर्शकों, आपको याद होगा टीम के एक सदस्य फॉर्मेशन से अलग हो गए थे, मगर लगता है वे आप सबसे दूर नहीं रह पाए और आपसे दोबारा मिलने की खुशी बयां करेंगे एक अनोखे करतब के साथ. तो चलिए अपनी नजरें ले चलते हैं अपनी बाईं ओर. एंड कैन यू स्पॉट हिम? देयर ही इज कमिंग इन फ्रॉम योर लेफ्ट, नंबर 7. एंड ही इनवर्ट्स. प्लीज वेव एट हिम एज ही वेव्स राइट बैक एट यू. Flying on the right side of the leader is number 2 squadron leader Vashisht 190 PC Brar, number 6 wing commander Alok 183 PC Katre, and number 8 squadron leader Himanshu 188 PC Equino. दर्शकों, अब आपकी दाहिनी ओर यानी रडार बिल्डिंग की दिशा से आते हुए आप टीम को देखेंगे अपने अगले करतब के लिए. इस अगले मैनूवर में नजर आएंगे 8 विमान आसमान की तरफ उड़ान भरते हुए. लेकिन आप देखेंगे कैसे ऊपर जाते जाते ये अपनी दिशा 90 डिग्री से मोड़ लेंगे. Here's the team coming in from your right to present the Clover maneuver. और ये देखिए कैसे दाहिनी ओर से आरंभ होकर ये मैनूवर ठीक आपके सामने समाप्त हो रहा है. Diving down, outlining the shape of the clover leaf, a symbol of hope, faith and good luck. दर्शकों, जिन विमान को आप अपने सामने उड़ान भरता देख रहे हैं वे हैं हॉक मार्क 132. ऐसे एडवांस्ड फाइटर ट्रेनर जेट्स जिन पे ट्रेनिंग कर भारतीय वायुसेना के अफसर पायलट से फाइटर पायलट्स बनते हैं. और इस विमान का 360 डिग्री व्यू आपको दिखाने आ चुके हैं आपकी दाहिनी ओर से नंबर 7. So shift your gaze to your right as there he goes, pulling up and roll.
तरह नजर आती हैं और दर्शाती हैं अपनी पहचान, सूर्य किरण। Ladies and gentlemen, please brace yourselves and sit tight as you are in for a breathtaking surprise. And there goes number 7, blazing through the skies at more than 800 kilometers per hour and carrying out a roll off the top. दर्शकों, अब अपनी नजरें ले चलते हैं ठीक अपने सामने. From right above the Tejas aircraft, you will soon see the team approaching for its signature maneuver, the crossover break. You will see how on the leader's call, number 8 and 9 will cross each other and break away, followed by number 5 and 6. और अब से कुछ ही देर में मैं आपको सुनाऊंगी हमारे लीडर की कॉल सीधा उनकी कॉकपिट. वाले हैं बाईं ओर से सूर्य किरण 6 और 8 और दाहिनी ओर भी देखते रहे, वहां से आएंगे नंबर 5 और 9 आपको दिखाने अपना बार्ब्ड वायर क्रॉस. At closing speeds of more than 1,000 kilometers per hour, you will soon see 4 aircraft crossing each other right in front of you. लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसे जोखिम भरे करतब इतनी दक्षता से करने के लिए अटूट मेहनत और एक दूसरे पे पूरी तरह भरोसा करना बहुत जरूरी है. तो चलिए इस कठिन परिश्रम और भरोसे की एक और झलक आपको दिखाने आ रहे हैं हमारे सिंक्रो बडीज नंबर 8 और 9 आपकी दाहिनी और बाईं ओर से. So if you missed it the first time, here's your chance to catch them again. From your left and right, here come number 8 and 9 for a 1+1 cross, the most thrilling high five in the sky. And here they are from your left and right. दर्शकों, टीम के अगले मैनूवर में आप देखेंगे 5 सूर्य किरण के विमान आपकी दाहिनी ओर से आगमन करते हुए. You will see 5 aircraft flying in an arrowhead formation forming the alphabet A or Alpha. And leading the Alpha, you will see the team leader Surya Kiran 1 flying above number 2, 3, 4 and 7. And let me tell you, this letter A signifies the mighty aerospace power that the Indian Air Force is today. So all eyes to your right. But who's that on your left? And that was our daredevil number 5 Wing Commander Bharadwaj fearlessly piercing through the Alpha. दर्शकों, टीम के अगले मैनूवर के लिए कृपया अपनी नजरें अपनी बाईं ओर ले जाएं. टीम का अगला मैनूवर दर्शाता है भारत की अनेकता में एकता, जो है भारत की विशेषता.
Look to your left as you will see 3 aircraft, Suryakiran 6, 8 and 9 flying behind each other in a glorious display of unity to show how the soldiers of the Indian Armed Forces always have each other's backs. सज्जनों, अब आपसे अनुरोध है एक और बार अपनी नजरें बाएं तरफ ले जाएं. Approaching from your left will be Suryakiran 1, 2 and 3 flying straight, and number 4 and 7 will be circling them to form a helical structure resembling the DNA. From your left, here's presenting the Suryakiran team's DNA maneuver. तालियों की गड़गड़ाहट टीम तक पहुंच नहीं पा रही. Can we please have a round of applause to motivate the team? कैसे आपकी तालियों की गूंज से खिंचे चले आए हैं हमारे नंबर 5 and there he goes pulling up for a vertical Charlie. दर्शकों, बचपन में आप सबने लुक्का छुपी तो जरूर खेली होगी. तो चलिए आसमान में नजरें घुमाएं और ढूंढ के बताएं कि ये है कहां. ठीक अपने सामने देखिए. अगर एक विमान नजर आए तो एक हाथ से वेव करें और यदि दो दिखे तो दोनों हाथ से वेव करें. And those were 3 Suryakiran aircraft in the hidden split maneuver. Ladies and gentlemen, for the next maneuver, I request you all to shift your gaze to the right, as you will soon see 5 aircraft ready to present another clover maneuver, but this time with a twist. आपकी दाहिनी ओर से आप देख सकेंगे 5 विमानों को आसमान की ओर उड़ान भरते हुए. Ladies and gentlemen, let me tell you that flying these aircraft are some of the very best pilots of the Indian Armed Forces. दर्शकों, अपनी नजरें टीम पर बनाए रखें. आप जल्द ही देखेंगे कैसे नीचे आते आते ये न केवल अपनी दिशा 90 डिग्री से मोड़ेंगे, लेकिन आसमान में सूर्य की किरणों की तरह बह जाएंगे. And there they go, spreading out like the arms and services of the Indian Armed Forces. दर्शकों, आज के हमारे ऑब्जर्वर हैं विंग कमांडर अर्जुन 181 PC चिटनेस. Other pilots of the team are Wing Commander Kajla, Squadron Leader Jasdeep and Squadron Leader Vishnu, who are all from the Banner Squadron Equino. टीम की अगली प्रस्तुति के लिए कृपया अपनी नजरें आसमान में ही बनाए रखें. जल्द ही आपके सामने होंगे हमारे सिंक्रो बडीज नंबर 8 और 9 एक बहुत ही खास प्रदर्शन के साथ, जो कि समर्पित है 212 कोर्स को. And there they are
number 8 and 9 in the sky, forming a beautiful heart. This heart is dedicated to all the officers who have earned their stripes and rings today. We congratulate them and their proud parents who have come to witness the ceremony. And there goes our Cupid number 6, Wing Commander Alok, drawing a narrow. और ये था टीम का एरियल सल्यूट हमारे मुख्य अतिथि को. What you just witnessed is a culmination of hard work, training and dedication, as characterized by the Air Force Academy's motto, Shram Se Siddhi, achievement through diligence. To keep up with the schedule of the team, you can follow us on Suryakiran_IAF on Instagram, Twitter, Facebook and YouTube. On behalf of my team, I, Flight Lieutenant Kaval Sandhu, Katre Squadron, would like to thank you for being such a wonderful audience. Godspeed and happy landings. Ladies and gentlemen, after that scintillating display by the Suryakirans, you are about to witness a low-level aerobatic display by the world's most agile fighter aircraft, the Sukhoi 30 MKI, a multi-role, all-weather air superiority fighter aircraft. The display today is being performed by Wing Commander Parvinder Singh Chahal, fondly called Parry, and Flight Lieutenant Ashish Sharma, nicknamed Ash. They are presently posted in 31 squadron known as Lions. I, Squadron Leader Tinju Thomas, as commentator, will guide you through the display. Sukhoi 30 MKI is capable of a wide variety of missions such as supersession of enemy air defense, beyond visual range combat, electronic warfare, buddy refueling, recce roll and precision attacks using laser and TV guided bombs. The aircraft is also being armed with a wide range of indigenous weapons such as lethal BrahMos and long-range BVR Astra missiles. Sukhoi 30 MKI is licensed, produced by our own HAL Hindustan Aeronautics Limited, and a testament to Atman Nirbhar. Ladies and gentlemen, our showstopper of today's display, as Parry and Ash will position and come in with the deafening roar of the engines of the mighty Sukhoi right above you. So sit back, hold tight onto your seats. Parry and Ash are going to live up to the scorn motto, a kill with every blow. Both of them are alumni of the prestigious NDA and Air Force Academy. Parry is a qualified flying instructor and has instructed in the fixed training wing Hakimpet as well. He has over 1,500 hours on Sukhoi 30 MKI. Ash is fully ops pilot and has total of 600 hours flying hours. Ladies and gentlemen, the deafening roar of the engines of the mighty Sukhoi.
What a beautiful roll that was. Look at the aircraft as he's positioning for a slow speed run. What distinguishes supersonic aircraft from each other is the ability to fly at low speeds. This is precisely what the MKI will demonstrate now. Look at the high angle of attack. As they say, even the wind stops to stare. Flying in this manner requires not only a good degree of situational awareness, but also absolutely mastery on the aircraft. And now just flying at low speeds, but turn as well, as they will carry out a minimum radius turn with just 450 meters radius, ladies and gentlemen. You may have been too awestruck by the super maneuverability of the MKI to notice the finer details. Yes, ladies and gentlemen, are you ready for yet another loop tumble? Then put your hands together. Here they come for those who all missed the first time. Parry and Ash coming in. Ladies and gentlemen, look 12 o'clock straight ahead for loop tumble. And here he pitches up for the loop. There she is inverted, tumbles at top. And there she reducing the speed. She yaws. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the precision flying. You would have seen the amazing maneuvering in the new Top Gun movie. Well, now Parry and Ash will show you our own version of the same. Hold on to your seat and watch a war game now. Parry is going to pitch up right in front of you. Ladies and gentlemen, keep looking straight ahead. Parry pitches up. Picking up the enemy at 6 o'clock. Keeping eye on the enemy. Parry positions behind enemy and slices cut the sky in two halves. Does a complete 180 degree on the spot, taking a lock
launched, and there he shoots him down. Living up to Scorn's motto, a kill with every blow. That was just amazing, ladies and gentlemen. The pilot is now carrying out a repositioning turn for a tail slide. There she pitches up. Have you seen a fighter in reverse gear? If not, then watch on. Parry comes for tail slide. There you see 30 tons of machinery and 2 humans stationary in the sky. As the name suggests, she slides downwards in reverse gear. This maneuver shows the extraordinary handling of the aircraft and the stability of the jet engines right in front of you. Ladies and gentlemen, the pilots are saying they cannot hear your round of applause. Please put your hands together for the precision flying. And now Parry is positioning the flanker for a high-speed run. The MKI combines the ruggedness of Russian technology and Western avionics, but it does truly remain Indian at heart. There she comes from your right, flying past at speeds close to 1000 km/h. But do not be fooled by the noiseless dash. As you just saw, thunder always follows the Sukhoi. Ladies and gentlemen, Parry and Nash will come in for the last and final maneuver, the vertical Charlie, presenting salute to the Honorable Raksha Mantri. Look at the aircraft straight ahead coming in from your 12 o'clock. The aircraft zooming and rolling now happily into the sky. And they're living up to the Indian Air Force motto, touch the sky with glory. That, ladies and gentlemen, was a Sukhoi 30 MKI demonstrating its superior agility. This is the only operational combat aircraft in Indian Air Force with thrust vectoring and is truly the very best. Hope you enjoyed the display as we enjoyed performing for you. So this is squadron leader Tinju Thomas, commentator, signing off, and now hand over to parade commentators. Ladies and gentlemen.